Hi friends, welcome back to the third session. In this session, we will definitely talk about how to revise things in a limited time period that is available with us. Now, ideally, what you should understand is we have already discussed that how we should do preparation and how it should be planned. We have also we have also discussed that how one should plan 3 hours of exam. Now, the equally important point is revision part. A lot of students comes up with this point that's a DT taxation. इतना बड़ा subject है. How can we revise that in last 1.5 day? Or let's say when we did that for the first time, probably हमने 15-20 दिन. We took almost 15-20 days. Now, how do I revise the same in limited timeline of 1 day or 2 days? So that is where you need. It's not only about direct taxation. It is about almost all the subjects. आप अगर CA final में हो, CA inter में हो, every subject is so bulky, lengthy. In fact, if you'll ask me in CA, nothing is difficult. It's not because I'm CA, so I'm saying that. But you ask CA students also. You ask yourself, do you find that anything which is actually difficult, or do you find things which are very lengthy? And उसको limited time period में कैसे manage करना वो ज़्यादा problematic है as compared to things are difficult. So technically, if you have done proper planning, आप limited time period में subject एकदम properly खत्म कर दो. It will be done. But the issue is, how do you revise that in again limited time period? Because on last day, a day before exam, you will have only 1.5 day. आपको कोई भी level में हो, foundation, inter, final, कोई भी subject के लिए last में आपको 1.5 day मिलेगा. And you try and remember, it's your school habit. That day before exam, you revise everything. And then only you go and appear the paper in a confident manner. Because confidence तभी build होता है. Because if on the last day we revise everything, then only we will be confident. Now in CA, how do you revise things? If you will not revise in a proper manner, last 1.5 day में अगर आप revise नहीं करोगे, तो 110% you will able to create a big concern for your examination. So that is where what we suggest, yes, what Navkar suggests, consider this as वो golden words है ना, उसकी तरह लिख लेना इसको, because this is going to create a big impact on your career. And what we suggest is grading. Grading is most important thing. मैं आपको बता रहा हूँ why do we use the word as grading? Grading means we say A, B and C, or let's say A plus and A double plus, or whatever name you take it. Ultimately what we want is you should do grading. मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है. If you will ask me, FR जैसा subject है, तो पिछले 5 attempt के question papers निकालो, RTPs निकालो, MTPs निकालो, past papers निकालो, and just check कि सबसे ज़्यादा important topic कौन सा है जो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, एंड देन ऐसा कौन सा टॉपिक है जो रेयर केस में आता है, एंड अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी यानी अकॉर्डिंग टू दी वेटेज ऑफ ईच टॉपिक डिवाइड दैट इनटू ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी. सो व्हाट विल हैपन इज अ डे बिफोर एग्जाम यू विल आल्सो स्टार्ट रिवाइजिंग इन दैट ऑर्डर ओनली. पहले तुमको ग्रेड ए ही देखना है, देन ओनली यू हैव टू रेफर ग्रेड बी चैप्टर्स, and then only you have to refer grade C chapters. So अगर grade C नहीं भी देख पाए ना तो भी you are not in tension, because तुम्हें पता है कि जो एग्जाम में मैक्सिमम आता है that you have already revised. बट अगर ये ग्रेडिंग नहीं किया होगा ना, आप 0 से लेके स्टार्ट करने बैठोगे लास्ट डे रिवीजन करने के लिए, फिर पता चला जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है ना वो रिवाइज नहीं कर पाए, और जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है ना वो सबका रिवीजन हो गया, तो उसका क्या मतलब? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उसको रिवाइज नहीं किया, एग्जाम में जाके बैठ गए, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वैसे ही पेपर हार जाओ. सो प्लीज डू ग्रेडिंग. इट विल नॉट टेक मच आवर. मैं बता रहा हूँ ना, आपने अगर मान लो एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हमने डिस्कस किया था कि 15 दिन है आपके पास, जिसमें 12 डेज में आप यू विल क्रिएट अ सब्जेक्ट प्रिपरेशन, यू विल डू द सब्जेक्ट प्रिपरेशन, आरटीपीज एमटीपीज लिख दोगे, पास पेपर्स रेफर कर लोगे, तो 15 डेज का मोर देन इनफ टाइम है. और मैंने बोला था ऑन 15th डे यू शुड राइट एक्चुअल पेपर आल्सो. पेपर प्रैक्टिस इज आल्सो रिक्वायर्ड. Now 15th day evening when you will complete writing paper, spend 1 hour or 2 hour extra and complete your grading. कि भाई पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मॉडरेट है, एंड ये चैप्टर सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उसको एबीसी ग्रेडिंग में ला दो. अगर ला दिया ना, लास्ट डे ग्रेड ए ही देखना है. बी देख पाए बेस्ट है, सी देख पाए एकदम बेस्ट है, बट अगर एक आध कुछ रह भी गया सी में तो यू नीड नॉट वरी. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू द ग्रेडिंग, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी. दिस विल हेल्प यू इन रिवीजन फॉर श्योर. इनफैक्ट जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, हमने कहीं पे कुछ स्टूडेंट्स को पूछा था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू कुड क्लियर,
एंड हमने उन स्टूडेंट्स को भी पूछा था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू कुड नॉट क्लियर. मैं बताऊं, सबसे ज्यादा लोगों ने ग्रेडिंग को इंपॉर्टेंस दिया था. उसका रीजन है कि अगर ग्रेडिंग कर लिया है ना, यू नो ऑन लास्ट डे व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इन व्हाट टाइम टू डू, सो देन अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू परफॉर्म ऑन रिवीजन. एंड अगर रिवीजन अच्छा गया ना तो एग्जाम अच्छा ही जाता है. It is but nature. If you do revise on a last day in a much better manner, then yes, your exams will be in a much confident manner. And one more thing, everyone. Grading doesn't mean कि only chapters का ही grading होना चाहिए. Chapters के अंदर भी questions का internal grading equal important है. I'll tell you why. So what happens is, let us say one chapter which is almost 15-20 marks in last 5 attempts. So obviously you will put that as grade A. So now you will revise that as first. But you need to understand that if you want to revise that chapter, so in that chapter also there are going to be 100 sums. Some are new and some are repetitive. They are only for practice. So those questions which are for practice, which are more or less repetitive in nature, you can't spend time on last day for doing those practice sums also. So what you should do is, you should also inside the chapter, you should also do grading. Okay, bhai, this many questions I am supposed to do, they are grade A. This many questions if I can do, yes, I am in a good position, they are grade B. And this many questions, even if I will not be able to do, that's okay, they are grade C. So do chapter wise grading. So all the chapters should be graded in a proper manner, and more important, within the chapter, do topic wise grading. If you do both this grading, कब करना है? When you are doing subject, yes, important. But when you complete the subject on last day, on your 15th day of your preparation, you are supposed to do this grading. And without grading, make sure you don't sleep. Because if you do that, आपका last day का revision बहुत easy हो जाएगा. And last day revision will ensure you will go and appear in paper in a very confident manner. And that's the only thing which will help you in success. So we are discussing steps. Step 1, you should plan your preparation in a very minute plan manner, so preparation will become very easy. Second, we have already discussed that you should plan your 3 hours of exam, which is equally important. And the third and most important out of this 3, that is plan your revision. Because there are steps. If you don't do preparation, that is step 1, you can't go to step 2. If you do preparation but you don't do revision, then step 1 is done but 2 is not done, so your exam will not be good. So you should do preparation, you should do proper revision, you should also plan your exam in a proper manner. These are steps. एक भी स्टेप मिस हुआ ना तो आप सेकंड पे जंप नहीं कर पाओगे. अगर सेकंड मिस हुआ ना तो आप थर्ड पे जंप नहीं कर पाओगे. So plan each step in a proper manner, friends, and rest assured for remaining 2 points we will continue in next session. Thank you very much for your time. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.